Good afternoon. Now, today I will teach you English prose for all the sections of class 12th. See, a fellow traveler. This is the second chapter written by A.T. Gardiner. And in my previous video, I taught you how the author was upset and annoyed of Mosquito. Mosquito was his fellow traveler. He tried again and again to kill the mosquito, but he failed. He was very much helpless. In the end, he excused the mosquito and now he returned back to his seat. So let us see. This is the last paragraph of the chapter. From here, I took up my paper and he came and sat on it. When the author A.T. Gardiner returned back to his seat, he sat there and started reading newspaper. "Foolish fellow," I said, "you have allowed yourself into my hand. I have but to give this respect weekly organs of opinion. I snack on both the covers and you are a corpse neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes." So author says that he did not want to kill again the mosquito, but you are a poor fellow. Why have you here sat on my newspaper? So if you are here, so if I would like to kill you, then I will smash the both of cover of this paper. Certainly you would be a sandwich. You will crushed between the two pages of the paper, just on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes. But author is not doing. Author says that he will not do. He will not kill because he had excused him already. I have a preview and I will satisfy you that when this large animal says a thing, he means it. So according to author, if he had excused the mosquito, certainly he will not going to kill again. Whatever he says, that is certain. Moreover, I no longer desire to kill you. Finally, he says that he had no interest to kill the mosquito. Through knowing you better, I have come to feel, shall I say? So I know you better. And finally, I have come to feel, I have realized that you are a small creature, you are a little mosquito, and there is no reason to kill you. A sort of affection for you. Now I also I have affection for you. I love in this time, I love to you. I fancy that St. Francis would have called you little brother. I think if there is St. Francis, then certainly he would be called you a little brother. I cannot go so far as that in Christian charity and civility. So I cannot also go against the civility and charity of the Christian. But I recognize a more distant relationship. But I felt more the relationship between you and I. Fortune has made us fellow traveler on this summer night. Fortunately, we are a fellow traveler here in this summer night.
I have interested in you and you have entertained me. So in this way, I have just taken interest in you and you certainly entertained me. The obligation is mutual. Now this is mutual for both of us, and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. That is the real, that is the truth, that we are a fellow mortals. We are living beings. Both of us are living beings. The miracle of life is ours in common. So both of us are just living here in a common way, and its mystery too. Our life are also full of mystery. I suppose you don't know anything about your journey, so I think you do not know where to go, and also I am not sure that I know much about mine. It means to say that the author says that he does not know where he to go. We are really, when you come to think of it, a good deal alike just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the light carriage, flirting about the lamp for a while and going out into the night again, perhaps. So according to the author, he thinks that there is just similarity between both of them, and that's why there is no reason to kill the mosquito. Now, just when he saw the mosquito, it was fluttering around the lamp, and for a while he was then disappeared. Ultimately, he appeared just round the lamp, and in the second minute he had disappeared. So going on tonight, sir, said a voice at the window. Certainly somebody addressed him, sir, night has gone away. It was friendly porter giving me hint that this was my station. So there was a porter who addressed him to that he was giving him hint that there is a station. I thanked him and said I must have been dozing. So I said to him that I was dozing, and seizing my hand and stick, I went out into the cool summer night. So I took the stick and my hat and I went outside of the compartment of the train. As I closed the door of the compartment, when I shut the door of the compartment, I saw my fellow traveler once again it was fluttering around the lamp. Thank you. So अभी हमने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लेखक इस पैराग्राफ के अंतर्गत यह बताना चाहता है कि उसने कितनी उदारता बरती है, कितनी सिंपैथी, सहानुभूति दिखाई है कि उसने क्षमा कर दिया। यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि मैंने वहाँ से अपना पेपर लिया और वापस आ करके मैं अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन जब एक बार पुनः वह मॉस्किटो आ करके उसी मैगजीन के ऊपर बैठा, तो फिर मुझे लगा यह तो बेवकूफ़ है। और मैंने उससे कहा, लेखक ने उससे कहा कि अरे तुमने तो फिर स्वयं मुझे मेरे हाथों में स्वयं तुमने अपने आप को डिलीवर कर दिया। अब कोई बात नहीं, अगर मैं चाहूँ तो एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में तुम्हें इस मैगजीन के जो 2 पेज हैं, एक पीस ट्रैप और दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, दोनों ही उसके पेज के बीच में तुम्हें दबा करके पूरी तरह से सैंडविच बना सकता हूँ। बट आई सेड नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट भी करना चाहूँगा कि दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, अगर यह विशालकाय प्राणी कुछ कहता है तो थिंग्स दैट ही मीन्स इट, उसका यह मतलब ही होता है कि वह सही कह रहा है, यानी कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य कह रहा हूँ। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, सबसे बड़ी बात ये कि अब मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, अब अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मैं तुम्हें यह बताना भी चाहता हूँ कि अब मुझे तुमसे एक प्रकार से लगाव भी हो गया है। और अगर मेरे स्थान पर सेंट फ्रांसिस भी रहे होते तो तुम्हें अपना छोटा भाई बना देते,
अब आई कैन नॉट गो फॉर एज क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, अब मैं भी उस क्रिश्चियन की जो चैरिटी है, सिविलिटी है, उसके विपरीत तो जा नहीं सकता, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन अब मुझे यह पता चल चुका है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं से कोई संबंध है, और फॉर्चून ने, सौभाग्य से, हम दोनों एक दूसरे के सहयात्री भी बन गए हैं इस समर नाइट में। मैंने तुम में इंटरेस्ट लिया और तुमने मेरा भरपूर मनोरंजन किया, और अब हम लोगों का बराबर हो गया, किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर समस्या भी नहीं है, हम दोनों फेलो मॉर्टल्स हैं, और हम लोगों का संयोग भी एक ही प्रकार से समान रूप से है। और इस तरह से लेखक ने अब उसे पूरी तरह से क्षमा कर दिया, लेकिन फिर लेखक ने जब ऊपर दृष्टि डाली तो देखा वह वहीं फड़फड़ा रहा था। तब तक अचानक बाहर से, खिड़की के बाहर से कुली की आवाज़ आई और उसने कहा कि सर, कहाँ तक जाना है आपको? यह एक स्टेशन आ गया है। मानो वह संकेत कर रहा हो कि आपका स्टेशन आ गया है। तो मैंने उस कुली को धन्यवाद दिया, और उसके बाद मैं अपने हाथ में टोपी और छड़ी उठाते हुए वहाँ से डिब्बे से बाहर निकला, और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने उस कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया, और मैंने बंद करते ही खिड़की के अंदर बाहर से देखा, खिड़की से देखा कि वही मेरा फेवरेट ट्रैवलर वहाँ लैंप्स के बाहर उसी पर लैंप पर फड़फड़ा रहा है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, all of you must explain all these paragraphs. Thank you.